ISRO is all set to launch the third and final developmental flight of SSLV D3 EOS-8 mission from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. As part of this mission, ISRO will be testing its small satellite launch vehicle and place the latest Earth observation satellite into orbit. If the launch is successful, it will complete the development of the SSLV, which is ISRO's small lift launch vehicle. This rocket can carry satellites weighing up to 500 kgs and place them in the low Earth orbit. This achievement will allow Indian industries to start using this rocket for future missions with support from the New Space India Limited, a government-owned company. Visuals on your screens of course, the launch that is currently taking place. Let's also listen into what's happening. विवरण SSLV D3 EOS-8 मिशन का। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक बार फिर दोहरा देते हैं। SSLV प्रमोचन यान की विश्वसनीयता एक बार और सिद्ध की जाएगी इस प्रमोचन द्वारा। माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ संगत निर्भर उपकरणों का विकास तथा उनका तकनीकी प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भावी प्रचालनशील उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीकों का प्रदर्शन करना, जिसमें एकीकृत एवियोनिक पैकेज, एम्बेडेड PCB व बैटरी के साथ संरचनात्मक पैनल, लचीले सौर पैनल और ड्यूअल जिम्बल एंटीना जैसी नई प्रौद्योगिकियों को माइक्रोसैट में समायोजित करना भी शामिल है। अब हम उड़ान से 2 मिनट 40 सेकंड की दूरी पर। The year 2024 began as the New Year's Day dawned with the successful launch of PSLV C-58 EXPOSAT mission. Aditya L1 spacecraft, the maiden mission of ISRO to observe Sun, has been successfully placed in the designated three-dimensional halo orbit of the Sun-Earth Lagrange's point L1 on 6th of January. On 17th February, INSAT 3DS was injected by successful launch of GSLV F-14. With the third consecutive success of reusable launch vehicle landing experiment on 23rd June, landing experiment series are complete. On 22nd of July, ISRO conducted flight experiment for demonstration of air-breathing propulsion technology through the launch of RH-560 sounding rocket from SDSC Shar. Today, we are gearing for the SSLV D3 EOS-08 mission from SDSC Shar. We are about 1 minute 30 seconds from the launch. अब हम लगभग 1 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं उड़ान से। प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा T0 पर। यह मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है। इस मिशन के पूर्ण परिपथ की ट्रैकिंग के लिए रडार स्टेशंस में शार, त्रिवेंद्रम, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर और यत्रगा स्थित रडार स्टेशंस इस पर निरंतर नजर बनाए रखेंगे और हम तक वास्तविक समय पर यान की सभी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। अब कुछ ही समय पर हम देखेंगे प्रज्वलन। -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का 20 seconds. और यह अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है।
सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। An altitude of close to 68 kilometers in 114 seconds. Plus 2 minutes. Shar and Trivandrum tracking stations are currently acquiring the data. Stage ignited. First stage separated. जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित था द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है तथा प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। We now have the confirmation of the completion of action of first stage, its separation, and the second stage already has commenced its operation. द्वितीय चरण भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 7.7 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS2 currently operational. Plus 3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है Stage performance तो इसे normal. यान से पृथक कर दिया गया है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण SSLV का प्रज्वलनरत है। Around 200 kilometers altitude. Shard, Trivandrum and Port Blair stations have currently the visibility of the flight path. यह चरण लगभग 109 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएगा, फिर इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Plus 4 minutes. इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। इसका अर्थ है वह अपने संवेदक से Stage action completed. संकेत प्राप्त कर अपने दिशा निर्धारण स्वयं कर रहा है। अब SS2 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह बंद हो चुका है। उसके साथ ही SS2 S3 कोस्टिंग फेज जारी है। यह कोस्टिंग फेज लगभग 163 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle is in combined hosting and performance is normal. The second stage SS2 has completed its operation, but presently still with the ongoing rocket and combined coasting is in progress. दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। Plus 5 minutes. SS2 SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS 8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेसबैंड भंडार और पोजीशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर
एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, Vehicle performance normal. जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। इसमें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ घटकों का इस्तेमाल कर कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल पैनल में ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड अंतर्निहित किया गया है। इसके अलावा इसमें बैटरी, ड्यूअल जिम्बल एंटीना, फेज्ड एरे एंटीना और लचीला सोलर पैनल लगाया गया है। इनमें से हर एक घटक ऑन बोर्ड तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। All right, so there you heard it. I also have with me Group Captain V.N. Jha with us, who's been patiently watching the launch along with us. Group Captain Jha, of course, once again, I turn to you to explain to our viewers what really is the significance of what India is hoping to achieve today. Very good morning to you, and compliments to ISRO for this successful launch of the small launch satellite vehicle. You know, till now we have been seeing the PSLV, GSLV. These are the huge vehicles which launches to the tune of about 4 tons of the payload. But what happens if someone has to launch a small satellite, like in this case? There is a micro satellite, a normal satellite, EOS, Earth Observation Satellite that we call it. It has got the full function of any of the bigger satellite, but it uses the systems and subsystems which uses the micro circuits, mini circuits. Some of the nano technologies also have been used. So overall dimensions and the weight has reduced. So with the reduced weight of the satellite, suppose some satellite is just about say 50 kgs or 100 kgs, which has to be launched. Now this small satellite launch vehicle, SSLV, is there one to be used for all this. Technology now it stands proven. Of course, it is still going through the various stages of a launch. Third stage has already had its complete function. That will be now separating out, and thereafter the entire payload section also has got a small engine motor which can trim the velocity. What happens while launching a satellite? If the orbital velocity is not achieved, then the satellite will fall. Velocity at say 475 odd kilometer altitude from the Earth, which this satellite is supposed to be injected into, there it has to have about 7.6 or 7.5 kilometer per second of the velocity. If the velocity is less than that, then the satellite will gradually fall back. So that trim velocity is the one which the payload section is right now carrying, and it will precisely achieve that velocity and then inject the satellite at the space, at the place, at the inclination it is supposed to be, I think 37.5 odd degree inclination it is taking through. So it will inject in that particular section at particular place. Thereafter, the satellite will be under the monitoring and control of the Earth station. It will come up there. This particular satellite also takes a small, kids sort of very small satellite, toy satellite, which is about 200 grams. It's just a demonstration technology that even mass as little as 200 grams can be injected by this small satellite launch vehicle. So it's a overall, jump in the performance of the ISRO for a small satellites to be launched. Till now, what used to happen is, our own satellites from the other nations, satellite from the private station, that all used to come, and then the ISRO used to wait for the amount of the loads that it can carry. At least 1.5 tons or 2 tons, it used to wait for the payloads to arrive at ISRO to be, for the launch, and then the satellite is to be launched. Now what will happen with a small launch vehicle, even a smaller mass, a single satellite can be launched at a given time. It is not only ISRO, even the other
private players are there today, which can launch up to 100 kg of the satellites into the desired orbit. So all these are happening, compliments to Government of India to have opened the space sector to everyone. Right now we are witnessing the launch of ISRO's small satellite launch vehicle, which is launching the EOS-8, which will be performing all Earth observation functions, but it has got many of the systems and subsystems which are miniaturized using the smaller nano technology or the micro technology, mini technology. All these things are in use. So with that, the overall mass of the future satellites could be reduced, and in addition, it has got, this particular satellite is also taking one observation sensor, which will be fitted to the Gaganyaan's window. Right. That will measure how much of the ultraviolet is coming to the windows of the Gaganyaan. So compliments, it's a successful launch, and of course in another about say 3 or 4 minutes we will know whether it has been injected into the desired orbit or not. It should be. There should be no problem at all. Right, absolutely. Group Captain Jha, thank you so much, sir, for joining us on the broadcast. Meanwhile, let's go back to listen into what's happening. है जिसे plus 12 minutes, उपग्रह को उचित अभिवृद्धि प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसका भी थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब है यान अब उचित उपग्रह को Satellite injection conditions are achieved. उपग्रह को अंतक्षेपित करने की स्थितियां प्राप्त हो चुकी हैं। The velocity trimming module had worked for a minimal time to acquire the injection parameters for the primary satellite separation, and there is a confirmation that the orientation and the altitude are appropriate for the satellite separation. We are awaiting eagerly anytime now the separation of EOS-08. इस मिशन के मुख्य उपग्रह EOS-8 को कुछ ही समय पर उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। EOS-08 satellite separated. इस मिशन के मुख्य उपग्रह EOS-8 को सफलतापूर्वक 475 किलोमीटर की सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में अंतक्षेपित कर दिया गया है। The primary satellite EOS-08 has been Plus injected 14 into the 475 kilometer altitude. अब इस श्रृंखला में अगली गतिविधि होगी DSSR-0 डेमोसैट सैटेलाइट का अंतक्षेपण। Next event in the mission is the separation of the passenger payload, SRO Demosat. इस मिशन के पूरा हो जाने के पश्चात अंतिम तंत्र जो कि VTM है उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे अंतरिक्ष में अनैच्छिक व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए यह एक इसरो की जिम्मेदार पहल है।
कुछ ही सेकंड्स में अब हम देखेंगे SR-0 डेमोसेट उपग्रह का अंतःक्षेपण। ऊंचाई 475 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड। SR-0 satellite separated. और सबके लिए हर्ष का पल यहाँ पर रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है SR-0 डेमोसेट पृथक हो गए। Passenger payload also has been deployed. But mission is continuing for VTM passivation. VTM passivation takes place in the non-visibility period approximately 420.217 second to 5367 second. VTM passivation status will be updated in the second orbit from Trivandrum Telemetry Station approximately 5963 seconds. All the stations involved in operation shall continue with operations. Handing over to Mission Director. This is Mission Director. The EOS-08 satellite as well as the SR-0 satellite has been injected into the required orbit. This SSLV D3 EOS-08 mission has been accomplished. जी हाँ, इसके साथ SSLV D3 EOS-8 मिशन सफलता को प्राप्त करता है। आप सभी दर्शकों के लिए आपका दिन मंगलमय हो। The third and final developmental flight of SSLV is successfully accomplished. SSLV, another arrow in ISRO's arsenal. We take leave from you. Up next is the address by Secretary to US, Chairman ISRO, Dr. S. Somnath and the mission executives. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.